A very good morning to all the sportive hearts who have joined us for this virtual observation of the National Sports Day. DAV Chandrasekharpur welcomes you all. The esteemed guest for the day, Arjuna Awardee, Mr. K. Ravikumar, Revered Principal Sir, Dr. Kesav Chandra Satpathy, supervisors of the school, our dear parents and our beloved students. The National Sports Day was initiated in the year 2012 in India to commemorate the birth anniversary of the man who made hockey synonymous with India, Major Dhyan Chand. Under the leadership of Major Dhyan Chand, Indian hockey team has seen several victories. He specifically led the Indian team for 3 Olympic medals in 1928, 1932 and 1936. Because of these 3 events, India made a name in the annals of hockey history. And here we are celebrating the birth anniversary of Major Dhyan Chand. National Sports Day is also observed to enthuse our students, our children, the spirit of sportsmanship. We teach our students that it is not important to win, rather what is more important is the participation. The day is celebrated with sports tournaments and walkathons and marathons being observed throughout the country. Last year in 2019, our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, initiated the Fit India campaign, a nationwide campaign that was aimed to make sure that the citizens of India participated and incorporated physical fitness into their day-to-day lives. This is the reason, my dear children, that we have Khelo India classes in our timetable. So now, without any further ado, let's begin our observation for this National Sports Day by paying our tribute to Major Dhyan Chand. I would like to request our esteemed supervisors and the teachers from the Department of Physical Education to light the lamp and pay our deepest homage to the man who made sure that hockey is the national sports of India.
esteemed dignitaries. Sports has the power to inspire. Sports has the power to excite. Sports has the power to educate. It teaches the youth about hard work, perseverance. Those incredible moments where sheer will overrides all kind of odd situations. That is the nature of sports. To speak more about this, we have with us Master Ahan Agarwal, a student of class 6, who is here to present his thoughts through his poem. नमस्कार, मैं आहान अग्रवाला डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र आज आपके समक्ष ध्यानचंद जी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आओ बच्चों, आज हम सभी ध्यानचंद को जाने, हॉकी के इस जादूगर को कविता से पहचाने। सन 1905 देश ने एक रतन धन पाया, जिसने हॉकी में भारत का जग में ध्वज फहराया। सेना का छोटा सा सैनिक दृढ़ इच्छाओं वाला, कर ना सका जो कोई अब तक ऐसा कुछ कर डाला। लेकर हॉकी गया जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आया और पहुंच अमेरिका, उसने अपना खेल दिखाया। सारे जग में धूम मच गई, ओलंपिक भी जीते, हॉकी वाले उसके आगे सारे पानी पीते। बर्लिन ओलंपिक में उसको हिटलर ने पहचाना, बोला सैनिक ध्यानचंद से पास हमारे आना। खेल तुम्हारा सबसे अच्छा, अपना नाम बताओ, फील्ड मार्शल तुम्हें बनाऊं, तुम जर्मन आ जाओ। सारे जग में इसी तरह से उसने धूम मचाई, तुम भी ऐसे बनो जहां में। बात समझ में आई? 3 दिसंबर सन 79 को वो स्वर्ग सिधारा, मैंने भी अपने कंधों का उसको दिया सहारा। ध्यानचंद का बच्चों से था अपनेपन का नाता, जन्म दिवस उनका ही बच्चों खेल दिवस कहलाता। धन्यवाद। खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होते हैं जो खेल के साथ साथ दिल भी जीत लेते हैं। Thank you, Ahan, for your wonderful thoughts through your poem. Thank you. Sports and games also inspire the students to be more innovative and creative in their approach. Here we have Master Vivekanand Naik, the sports secretary of the school, with his different approach towards sports on this day. It is rightly said that only he who can see the invisible can do the impossible, and this impossible was done by the legendary hockey player Major Dhyan Chand, because of whom we celebrate this auspicious occasion. Good morning, respected principal sir, teachers, supervisors and my dear friend. This is Vivekananda Naik, the sports secretary of DAV Public School Chandrashekarpur, welcoming you all to the virtual platform of celebration of National Sports Day. This is a small video prepared for all of you. Hope you all like this. In first match, 3 goals. In Olympic matches, 35 goals. And in international matches, around 400 goals. Overall, 1000 plus goals are enough to call Major Dhyan Chand the magician of hockey. Still, if anyone among us doubt his caliber, then I would like to share some important facts about his career, which would clearly prove that in the history of hockey, there has been no other player like Dhyan Chand, and no other is expected in the future as well. The hockey ball was so often held by Dhyan Chand's stick that many a times his opponents used to doubt him on playing with some special and extraordinary hockey stick. Once in Holland, due to the allegation of carrying a magnet on his stick, his hockey stick was inspected by breaking it into pieces. Starting from the draconian Adolf Hitler of Germany to the famous cricketer Don Bradman, Dhyan Chand had drawn all of them crazy with his miraculous hockey skills. An instance of 4th August 1936 Olympic final in Germany, where the field was full of audience and Germany and India were fighting for the gold medal. The German dictator Adolf Hitler was also present there to motivate his players.
the hockey final started, and until first half, it was a fierce competition. Still, India managed to put the score of 1-0 on the board. In between the first and second half, something strange happened which nearly astonished all the audience in the field. Rumors say that the German operators drenched the hockey field more than needed. This was done to stop the Indian players wearing low quality, cheap shoes from running and scoring goals, and ultimately stop them from winning. Looking at the wet pitch, Major Dhyan Chand decided to play the game without shoes so that he could run properly. After that, he and his team were unstoppable and managed to score 7 more goals, one after the another, and won the gold medal. Looking at the shameful defeat of his team, Hitler chose to move away in the middle of the game. The next day, looking at the inexplicable hockey skills of Dhyan Chand, Hitler called for him in his office and analyzed him from top to bottom. Dhyan Chand was wearing torn shoes at that time. Hitler pointed out his torn shoes, bribed him with good job, and offered him to play for Germany. But this patriot always played for his own country, and his pride laid in the game played for India, and refused the stubborn dictator Hitler and returned back from his office. Other than India, many other legends all around the world have praised Dhyan Chand's talent. The acclaimed cricketer Sir Don Bradman once said for Dhyan Chand that he scores goals as cricket runs. I hope that now we all know the factual reasons that why is Dhyan Chand called the magician of hockey. Now let's know about Dhyan Chand from his beginning. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Prayagraj, Uttar Pradesh. His father was a soldier in Indian Armed Force. During his childhood, Dhyan Chand was not so fascinated with hockey but was curious about wrestling. He completed his elementary education from a nearby school and at the age of 16 joined the Indian Army in the year 1922. Being in army, he developed an interest in hockey and one of his friends, Major Tiwari, encouraged him to play it. Slowly and gradually, hockey became his passion and he started practicing it after his duty under the moonlight. Friends, let me inform you that till now his name was Dhyan Singh, but his friends added Chandra to his name after watching him practice under the moonlight, and Chandra gradually turned to Chand. So like this, Dhyan Singh became Dhyan Chand. Through his passion and practice, he made himself the greatest player of hockey. And in the Indian Army, he consistently gave his best performance, because of which he got continuously promoted and became a major. In 1926, he made his debut in international match which was being played against New Zealand. In 1927, London Folkestock Festival, he scored 36 goals out of 72 goals alone in 10 matches against British hockey team. In 1928 Summer Olympics in Netherlands, he scored 2 goals out of 3 and India won the match with 3-0 scoreline and made the gold medal to their name. In 1932 Los Angeles Summer Olympics, India created history by winning the gold medal with a scoreline of 24-1 against American hockey team. In that year, Dhyan Chand had scored 133 goals out of 368 goals alone. He was an integral part of Indian hockey team who had won 3 times Olympic gold medal in a row. Till the age of 42, he contributed in international matches for India and then retired in the year 1948. Even after retirement, he kept on playing hockey matches in army.
In the year 1956, Major Dhyan Chand was honored with India's third highest civilian award of Padma Bhushan. Dhyan Chand gave a new identity to Indian hockey team and created such an impact throughout the world which can never be replaced. 29th of August, which marks to be his birth anniversary, is celebrated as National Sports Day in India. This is all about the story of Major Dhyan Chand. With this, I sign off. Hope you all enjoyed it. Thank you. Thank you, Vivek, for your creative expressions. Now I would like to invite the Head of Department of Physical Education of our school, Mr. Durga Prasanna Das Mahapatra sir, to enlighten us all on this day of National Sports 2020. Good morning and welcome. Extended Principal sir, respected supervisors, dear colleagues and my lovable parents. Dear friends, as you know, today is an auspicious day for all of us. Today is the National Sports Day. In fact, this day is also observed as the birthday of Dhyan Chand, the hockey wizard Dhyan Chand. Let me say one thing, the legend. Dear friends, I will not kill your valuable time. I will throw more light on the past glory. In fact, I am talking about 1928 Amsterdam Olympic, 1932 Los Angeles Olympic, and last but not least, 1936 Berlin Olympic. In fact, India was dominating the entire world. It was made possible only because of the Dhyan Chand. Dear friends, let me tell one thing. The final match was played between India and Germany. And that time, entire world was terrified by the Adolf Hitler. Adolf Hitler was not in readiness to accept the defeat. So what happened? The match was played and the Germany was badly defeated by India. What happened as soon as the match is over? Dhyan Chand was called by the Adolf Hitler Chancellor. Mr. Dhyan Chand, what post are you holding? Sir, I am a soldier. You better quit India. You better take the citizenship of Germany. Directly, I will be giving you general post. So very politely, Dhyan Chand said, no, sorry sir, I am extremely sorry to refuse. In fact, that could display his patriotism. In fact, he was not in mood to quit India. Dear friends, listen to me one thing. That D factor always giving maximum importance. D stands for decency, D stands for decorum, D stands for discipline, D stands for dedication, D stands for decorum. And in fact, that program and whatever the problem, and the Dhyan Chand could face a lot of obstacles and lot of setbacks and a lot of hurdles, but nothing could embitter the sweet relationship between him and his success. He was just like a mouse in the canal. He was struggling, but he got the success. In fact, in the British newspaper, it was written, this is not a game of hockey, this is a magic. In fact, Dhyan Chand is the magician. So dear students, so I will be saying a lot of things about the auspicious day, the sports day. Try to do some activity. Try to do some physical activity. That is a saying in English that a tripling job is better than idleness. So according to that Plato, sound mind dwells in sound body. If your physics is good and your mind can be good. So that's why I am saying the central government in the CBSE has implemented a terrific program. I am talking about the Khelo India program and I am also talking about Fit India Freedom Run. Dear students, we are all the bona fide students of the DAV CS4. Let us take part actively. Let us enjoy.
in this corona pandemic to try to do activity so that you can make your body fit. Do some physical activities. I am not compelling you to do that exercise. Instead of doing the exercise, you can do different types of physical activity, because exercise is a panacea of all physical ailments. So that's why I am telling you, one thing is to be kept in your mind: stay out of court, stay out for sports, live by code, otherwise get lost. According to Bruce Lee was saying one thing: I do not want to practice 1,000 skill, I want to practice one skill 1,000 times. That is the temperament. Love yourself. You can doubt others, but never ever doubt yourself. So don't try to deviate from the path of virtue, being an athlete, being a player. Try to believe in the moral set of principles that is known as sports ethic. Whatever the circumstances are, don't try to deviate from the path of sports ethic. So thank you very much. All the best. Jai Hind, Vande Utkal Janani, Joy DAV. Thank you once again. Thank you so much, sir, for your informative address. I would like to take this opportunity to welcome our revered principal, sir, Dr. K.C. Satpathy, to address our dear students as well as other members who have joined us on this virtual platform on this significant occasion. Good morning, everyone on this virtual platform. We are not able to meet each other due to this pandemic situation throughout the world. But still then, I love you, my children, and definitely we'll meet very soon. I, on behalf of this institution, I welcome my ever enthusiastic students to this virtual observation of this year's National Sports Day. I extend a hearty welcome to our guest of the day, Arjuna Awardee Mr. K. Ravi Kumar, our very own national hero in weightlifting, who shone through his exemplary achievements in the 2010 Commonwealth Games. May youngsters, as you, continue to be inspirational and guide our students in the field of sports. My dear young friends, I always believe sports is not just a test of physical endurance or mental toughness, rather a celebration of human excellence and a comprehensive almanac of a beautiful life cycle. The people who are into sports display the characters which are the essential ingredients for a healthy and balanced lifestyle. The observation is for the sportsman spirit that we want to develop in you. The ability to rise over all difficult situations in life, and when the scenario is not in our favor, to accept the circumstances with grace and dignity and overcome all the obstacles. No doubt, this pandemic has brought everything to a standstill, but has opened new vistas for opportunities. I understand and realize how difficult these 6 months of lockdown must have been for my enthusiastic young friends. Our physical activities and games are quite limited when we are cooped up at home. As necessary, it is to stay protected from the virus
it is also important to take extra efforts towards maintaining our physical activities through different channels, even by staying at home. As they say, all work and no play makes Jack a dull boy. I think you do agree with this. Playing is highly essential for the development of both our body and mind. Please remember, your momentary break from the outdoor activities is a significant time to introspect about the strategies and latent skills you have. Opportunities are quite open for indoor activities under this apparent stillness. It is a chance for you to be creative about indoor games. Go free with your imagination and innovate new forms of games with your friends. You all can gel together and harness true potentials. Find out various ways and means to exercise your mind, body through various indoor plays, board games, or any indoor games help us to practice essential cognitive skills and enhance the parts of brain responsible for complex thought and memory formation. It helps us to distress and makes us happy, which is highly essential in this corona pandemic lockdown. So, utilize your time meaningfully, disperse your energy through games and sports as much as possible. Believe in yourself and display the best you can register. Accelerate the dynamism in yourself and be a true ambassador of sports and sportsmanship during these tough days. Play, celebrate, explore, and excel. On this National Sports Day, I hope you learn the best of sportsman spirit and may you remain playful all throughout your life. Thank you. Bande Utkala Janani. Thank you, sir, for your words of wisdom and advice. I am sure that even in this lockdown period, we will ensure that we are all physically fit and mentally active. My dear students, it's my privilege to invite our guest on this specific occasion, Arjuna Awardee Mr. K. Ravikumar, a person who is a national pride and the second person from the state to have won the Arjuna Awardee in weightlifting. A native of Behrampur, he was spotted by his trainer while practicing bodybuilding at a local club. That changed the course of his life. In the 2009 Commonwealth Games held in Malaysia, he won 3 gold medals, and he repeated this performance in the 2010 Commonwealth Games held in New Delhi by securing 3 gold medals again. In the year 2011, at the Senior Weightlifting Championship held in China, he won 3 bronze medals. We have had the pleasure to have him with us on this campus for the 2018 National Sports Day. He had come down to our premises, interacted with our students, patiently listened to them and answered all their queries. We again have the pleasure to have sir with us on this virtual platform. So let's welcome sir and listen to his address for our students. Sir, please. डीएवी चंद्रशेखरपुर के सभी टीचर्स, सपोर्टिंग स्टाफ और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार और नेशनल स्पोर्ट्स डे का हार्दिक अभिनंदन।
मैं आप सबको ये बता दूं कि इससे पहले भी मैं आपके स्कूल में आ चुका हूं और इस महामारी के टाइम पे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं, ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं अदनान सर का भी मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पुराने बच्चे भी होंगे जिन्होंने मुझे जानते भी होंगे और कुछ नए बच्चे भी होंगे, तो इसलिए मैं अपने बारे में थोड़े बहुत मैं कहना चाहूँगा। मैंने 2002 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, समर कोचिंग कैंप से मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया और 2005 में मैंने साई हॉस्टल ज्वाइन किया था, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो कि ढेंकानाल में था। वहाँ पर मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत की और एक नेशनल प्लेयर बन पाया वहाँ पर। उसके बाद 2007 में मुझे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक मौका मिला, एज ए सिविल बॉय मुझे वहाँ पर सिलेक्शन मिला और मैंने 2005-7 में मैंने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की और वहाँ का जो ट्रेनिंग था काफ़ी हार्ड था, जिस वजह से मुझे 1 महीने के अंदर मैंने 10 से 12 बार मैंने वहाँ से भागने की कोशिश किया था। और बट मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो कुछ उड़ीसा के प्लेयर्स थे, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिव किया और मुझे वहाँ पर रोका, जिसका परिणाम आज आपके सामने मैं इतना बड़ा प्लेयर भी बन पाया। अगर मैं वहाँ से भाग जाता तो मैं शायद मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन पाता। तो 2000 मेरा सबसे बड़ा फर्स्ट इवेंट जो था जूनियर एशियन चैंपियनशिप जो 2007 में जॉर्डन में था, वहाँ पर मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और जहाँ पर कि मैंने इंडिया को सिल्वर मेडल दे पाया था। और उसके बाद 2009 में मेरा फर्स्ट सीनियर कॉर्नर चैंपियनशिप था, जहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल दिया था इंडिया को। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ पर मैंने 5 रिकॉर्ड के साथ 69 कैटेगरी में मैंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिया था। उसके बाद 2011 में मैंने एशियन चैंपियनशिप में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने इंडिया को 3 ब्रॉन्ज मेडल दिया था, क्योंकि हमारे लिए एशियन चैंपियनशिप काफ़ी टफ होते हैं। और उसके बाद मैंने 3 ओलंपिक्स के बाद मैन कैटेगरी में मैंने 2012 में मतलब 12 साल के बाद मैंने मैन कैटेगरी में मैंने इंडिया को क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए और मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और वहाँ पर मेरा 11th पोजीशन रहा। ड्यू टू वेदर चेंज की वजह से मेरा तबीयत वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गया था, जिस वजह से मेरा परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा नहीं रहा। और 2012 के बाद ड्यूरिंग ओलंपिक्स मेरा रोटेटर कप कंप्लीट टियर हो गया था, जिस वजह से मुझे सर्जरी करना पड़ा। और उस सर्जरी के बाद मैंने काफ़ी नेगेटिव प्रॉब्लम्स फेस किए, जैसे कि रवि वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता है, फेडरेशन एसोसिएशन, मेरे फैमिली मेम्बर्स सभी ने यही कहा कि रवि वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता है। बट उसको एक चैलेंज में लेके मैंने वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू किया, रिहैब किया, डॉक्टर का एडवाइस लिया, ट्रेनिंग किया, काफ़ी मैंने प्रॉब्लम फेस किए, बट मैंने उस चैलेंज को साथ लेके चला और आगे बढ़ते रहा, जिस वजह से मैंने 2014 के फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने क्वालिफाई किया इंडिया की तरफ से और मैंने सिल्वर मेडल इंडिया को दे पाया था। और उसके बाद मैंने इन दौरान मैंने काफ़ी नेशनल पे मैंने गोल्ड मेडल दिए हैं और रिकॉर्ड भी मेरे रिकॉर्ड्स मैंने खुद ब्रेक किए हैं, जूनियर में और सीनियर में, बोथ में। और रिसेंटली 2019 का भी जो नेशनल था वहाँ पर भी मैंने गोल्ड मेडल दिया था उड़ीसा को। ये मेरा जो जर्नी था, स्पोर्ट्स का जर्नी था और अचीवमेंट था। इसमें और भी बहुत सारे मेडल्स हैं, अगर ऐसा बोलता रहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो कभी फिर से इंटरेक्ट करेंगे, कभी मैं लाइव आऊँगा और आप लोग के साथ इंटरेक्ट करूँगा। आज का मेन मोटो ये है कि मैं आप सबके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, कभी भी हार नहीं मानना, अपने आप को हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करना, कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे मैं एक ओलंपियन बन गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। आज भी अगर जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे सामने अगर मेरा कोच नहीं होता है तो मैं अपने आप को अनसिक्योर फील करता हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा कि कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना और हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना। दूसरा, कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि मतलब ये नहीं समझ के चलना कि सक्सेस कैसे होगा, सक्सेस के पीछे नहीं भागना। मेरे लाइफ का ये सेकंड फंडा है कि मैं कभी सक्सेस के पीछे मतलब रिजल्ट के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं अपने आप को हार्डवर्क बहुत करता हूँ, जिस वजह से मेरा ऑटोमेटिकली मैं उस मुकाम तक पहुंच जाता हूँ कि सक्सेस जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप अपने आप को उस मुकाम तक लेके चले जाइए कि उस इतना हार्डवर्क कर लीजिए कि सक्सेस आपके पीछे आए, ना कि आप सक्सेस के पीछे जाओ। तीसरा, कभी भी अपने आप को मैं करके नहीं चलना, क्योंकि मैं का वर्ड जो है, मैं जो है बहुत ही खतरनाक है, नेगेटिव है। और पॉजिटिव ये होता है कि हम करके सभी को साथ लेके चलना, वो एक सबसे बड़ी बात होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सबका मन एक जैसा नहीं होता। फिर भी आप अगर सबको साथ लेके चलोगे तो वो भी एक आपका अचीवमेंट है। तो इसलिए कभी भी आपने आपको मैं करके नहीं बोला। दूसरा, चौथा है, आपके लाइफ में कभी भी कितना भी सक्सेस आए, कभी भी सर उठा के मैं मतलब नीचे बिना देखे आप आगे नहीं बढ़ना, झुक के ही रहना। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2 तरह का पेड़ होते हैं, एक आम का पेड़ होता है और एक खजूर का पेड़ होता है। आम का पेड़ आपने देखा होगा, खजूर का पेड़ बहुत लंबा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल होते हैं। बट आम के पेड़ बहुत छोटे होते हैं, उसका जो बेस है बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, और उसका फ्रूट्स भी मतलब आम भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट आपने देखा होगा कि खजूर के पेड़ में जितना भी आम फल होते होंगे वो उतना लंबा होता जाएगा, बट आम के पेड़ में जितना फल होते जाएंगे उसके जो डाइने हैं वो धीरे धीरे झुकते जाएंगे, क्योंकि आम के भारी के पन की वजह से। तो इसमें ये आपको बताना चाहूंगा कि जब भी साइक्लोन होता है या कहीं ज्यादा जोर से हवा ज्यादा चलता है, तो आपने देखा होगा कि खजूर का पेड़ पतला होता है, लंबा होता है, फिर भी वो गिर जाता है। बट आम का पेड़ इतना बड़ा होता है, उसका बेस इतना चौड़ा होता है, उसके कुछ फल ही गिर जाते हैं, बट आम का पेड़ वैसे ही वैसा खड़ा रहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कभी भी आम का पेड़ बना रहना, कभी भी खजूर का पेड़ मत बनना, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस आएंगे, बट अगर आप कभी भी ग्राउंड को पकड़ के नहीं चलेंगे तो खजूर के पेड़ की जैसा आप गिर जाएंगे, आम के पेड़ जैसा डटे नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि कभी भी अपने आप को एक आम के पेड़ की तरह आपके लाइफ में कितना भी सक्सेस आए, नीचे झुक के रहना, कभी भी आगे ऐसा नहीं कहना कि मैं ही बड़ा हूं करके। ये मेरे लाइफ के सबसे बड़े फंडे थे। सो फाइनली ये मेरे लाइफ का जो जर्नी था, और ये मेरे कुछ एडवाइस थे, कुछ मेरे सक्सेस के टिप्स थे। तो मैं सभी चंद्रशेखरपुर DAV स्कूल के सभी स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से अपील करूंगा कि अपने आप को स्पोर्ट्स में या किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखें और कुछ ना कुछ हटके से करें, ताकि आपको इंडिया के सभी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा के एक्टिविटीज़ पे आपको जाने और आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस आए। मैं चंद्रशेखरपुर के DAV के सभी स्टूडेंट्स से मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे सक्सेस आए, बहुत सारे तरक्की करें, चंद्रशेखरपुर DAV बहुत सारा तरक्की करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे यहाँ पर कुछ कहने का मौका मिला, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव ए गुड डे। Thank you, sir, for your words of advice, and we are grateful to you for lending us your time to be on this digital platform. I am sure that you serve as an exemplary inspiration for all our students. All this makes me miss our regular school days when our children used to be on the campus. Children used to be in the playground, playing, tackling, being in teams, talking to each other, running all over the place. But the COVID-19 pandemic has forced all of us to remain indoors, to take care of ourselves by maintaining social distance so that we break the contagion. Our children are at home. Yet, the spirit of playfulness, the spirit of games is still alive in them. Here we have a special presentation by a group of students who teach us, guide us on how we can remain fit even by staying indoors, how we can ignite the spark of playfulness in all of us, how we can play different games at home and ensure that we have a fit body and mind. अरे आज तो खेल दिवस है, देखते हैं शुभदीप क्या कर रहा है। कहाँ गया उसका नंबर? हाँ 9861।
कॉल क्यों काट दिया? फिर से कॉल लगाता हूँ। हेलो। अरे शुभदीप, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस सो रहा था। भाई अभी तक? हाँ यार, वो रात भर पढ़ाई करके ना मैं बहुत थक गया था, तो इसलिए देर तक सो गया। तू और पढ़ाई छोड़ छोड़। वेल, तूने कॉल क्यों किया है मुझे पहले बता। कॉल? हाँ, अरे आज तो खेल दिवस है, चल कुछ करते हैं। क्या आज खेल दिवस है? कुछ करना तो भाई बनता है तो, लेकिन करेंगे क्या? तू कुछ सोच यार। तू ठहरा खिलाड़ी, तू कुछ सोचना, मुझे क्यों पूछ रहा है? रुक, कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ भाई, आइडिया। क्यों ना एक काम करते हैं, हम सारे दोस्त मिलकर पास के मैदान पर चलते हैं और वहां पर जाके कुछ खेलते हैं और कुछ मजे करते हैं। अरे पागल है क्या? हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अरे बाहर कोरोना चल रहा है और सरकार ने घर के अंदर रहने के लिए कहा है। अरे यार, वो सब तो चलता रहेगा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं, मैं तो बाहर नहीं जा सकता, मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ रहे। अरे भाई, अगर हम अभी स्कूल में होते ना तो हम कितने सारे मजे करते, खूब सारी कसरत करते, और तुझे पता है ना हमारे असेंबली में हमारे लिए स्पेशल प्रोग्राम भी अरेंज किया जाता। लेकिन यार, इस घर में बैठा बैठा ना दिमाग को कुछ स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। भाई अभी तू ही कुछ सोच। एक मिनट, तू रुक, तू जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा और तू अपने छत के ऊपर जा और मैं अपने छत के ऊपर जाता हूँ, और वहां पर जाकर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ खेलेंगे। अरे वाह, बढ़िया आइडिया ये। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ पहले, उसके बाद मैं छत पे जाता हूँ और तू भी छत पे जा और वहां पर जाके हम खेलते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन देर मत करना, ठीक है? अरे हाँ बाबा, हाँ, देर नहीं करूंगा। चल बाय। हाँ, बाय। It's not whether you get knocked down, it's whether you get up. चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। You have to believe yourself when no one else does. तैयार जरा, get ready to fight, get ready to fight. Never give up. Great things take time. Stop thinking selfish and start thinking selfish. Get ready to fight. Get ready to fight. Hard work beats talent when talent does not work hard. उससे भी टफ तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. Get ready to fight. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. It is not mere an absence of infirmity or diseases. Get down, but get back up
Take your time. Make recharge yourself. Come back stronger. जोर लगा तू जान लगा अपनी अलग पहचान बना जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight 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 Dear friends, when any work comes to you, put yourself into that work. Why? Because danger for a sin is danger for all. That's why I conclude by saying, if you fail to prepare, you are prepared to fail. Thank you. Good luck. Thank you, dear children, for such a wonderful presentation. It just goes to show that even with limitations, we can come up with creative and innovative solutions in all situations. Thank you so much. Sports is not only about winning, it is about participation. Sports is never about a single person. It is always a team effort, a collective effort. I would like to take this opportunity to extend a vote of thanks to all the members who have helped us in making this event a successful one. My heartfelt gratitude to the guest for the day, Arjuna Wadi, Mr. K. Ravikumar. Sir, we are grateful to you for your precious words and time. A bouquet of thank you to our revered principal, sir, as he constantly guides and mentors us towards it all. Our graceful gratification towards the headmistress. Ma'am, we are thankful to you for your encouragement. Heartfelt thank you to the supervisors who have supported and encouraged all the members of the team. Special love and thank you to the students who, despite of the lockdown, have made the effort to send us the videos and their presentations for this occasion. My appreciation would be incomplete if I do not mention the teachers from the Department of Physical Education. They have constantly monitored, mentored and guided the students towards the creation and compilation of this program. At the end of it, I would like to say a thank you to each and every member who has helped in making this program. Thank you so much. Stay safe and stay fit.